Namaskar, very warm welcome to all our viewers on the very special day when we are here to talk of very emerging areas which we all have to do together. Yes, I'm talking about IGNOU's initiative towards Viksit Bharat 2047. It's a very mesmerizing moment for all of us when we talk about such a value-loaded words, and then we realize that yes, this is the mandate we have to make our country a developed country. To discuss all this, we are having a very elegant panel of experts, and I have the prime privilege of introducing them. And let me have the opportunity to let them introduce to you. To my extreme left is Professor R.S.P. Singh, who is the Director of School of Vocational Education and Training, from where we get a lot more cue how to make our Bharat a Viksit Bharat. Next to him is Dr. O.P. Sarma, a very powerful director with us, who is always talking about youth, who is always talking about innovation, who is always talking about startup and all those. So we are privileged to have him with us today in this very panel discussion. We welcome you, sir. And we are extremely fortunate to have the professor and director of School of Computer and Information Sciences, Professor P.V. Suresh ji, on whom the whole country, this science is of computers, the age is of computers. So we are equally fortunate to have you, sir, among us, and we would like to. But before we begin, let me set the ball rolling. You know, while we are talking about Viksit Bharat 2047, what it really mean? It means that Viksit Bharat is a concept, an idea, the vision of the government to transform the country into a developed entity by 2047. And as you all know, to make anything to happen, Yuva has an important role in this initiative. The youth has an important role in this very initiative. And जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो हम बात करते हैं कि उनका कैसे हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, कैसे उनको इन्वॉल्व करेंगे. सो वी नीड युवा ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव. We need to provide Yuva an opportunity to excel. We wish that Yuva to be ready to embrace new technologies. And when we talk about all this, we have to look towards what are our positives with us. You know, a country like us is having a workforce of 547 million, of which 41% of 1.4 billion population, जो 140 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें से ये जो 547 मिलियन की जो संख्या है वो 41% होती है. कितनी महती रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की एज ए यूनिवर्सिटी, आप एज ए युवा किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. और एक अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 आई थी, जिसमें कहा गया कि 1.4 बिलियन इंडियंस में से 1 बिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनकी जो उम्र है वो 35 साल की है. सो यहां पे 3 चीजों की जब हम बात करते हैं, किस तरह से उन्हें व्यवसाय में जोड़ा जाए, किस तरह से उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी कैसे की जाए, किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए, तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले आज हमारे 37वें दीक्षांत समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आज के दिन हमारे विश्वविद्यालय पधारे थे. उन्होंने विकसित भारत पे क्या कहा, उसकी हम आपसे एक छोटी सी वानगी, एक छोटी सी झलकी आपको
My young friends, let us not solely fixate on the endings, for today is also a beginning. Today we celebrate not just the completion of a journey, but the ignition of new aspirations. Always bear in mind, your learning never stops. Friends, you are fortunate, you are lucky to step into adulthood at exciting times, our Amrit Kal, where there is hope and possibility of all kinds. There is in place an ecosystem that is wholesome for exploring your talent and realizing your aspirations. Let me advert to the launchpad that all of you are presently standing on. And this is a very significant launchpad in the history of this great nation that has civilization depth for 5,000 years. You are henceforth part of marathon march to Viksit Bharat at 2047. महोदय, हम युवाओं से, हम विश्वविद्यालयों से किस तरह की संभावना चाहते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, इन सारे विषयों पे बात करने के लिए मैं सबसे पहले प्रोफेसर आरएसपी सिंह साहब के पास जाऊंगा और उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी संभावनाएं हैं और किस रूप से हम इस विकसित भारत 2047 तक पहुंचने का क्या इनिशिएटिव्स हमारे होने चाहिए। प्रोफेसर सिंह। धन्यवाद। और सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूं और खासकर वैसे विद्यार्थी जो आज के दीक्षांत समारोह में डिग्री और गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। और एक बड़ा अच्छा अवसर है आज के टॉपिक्स पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विकसित भारत 2047। और जैसा कि डॉक्टर प्रसाद जी ने अभी आपको बताया, PMLF 23, इसी से हम लोग चर्चा की बात आगे बढ़ाते हैं। उसमें स्टडीज में एक ये भी बात आई है कि जो लेबर फोर्स है का ट्रेंड है, नाउ इट इज चेंजिंग। इवन आज के मुख्य अतिथि भी वही बात कर रहे थे कि हमें एक परिपाटी, जो एक सेट नॉर्म्स है, जो अधिकतर पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स वी ऑल्सो से टू आवर किड्स चिल्ड्रन, उससे थोड़ा अलग हट के आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अवेलेबल हैं, खासकर हमारे विश्वविद्यालय में जो 21 विद्यापीठ के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कोर्सेज ऑफर करते हैं। वट एवर द इंडस्ट्रीज इज लुकिंग फॉर, व्हाट इज द इकोसिस्टम इज लुकिंग फॉर। तो उसमें जो PMLF 23 में जो बात कही गई है, सो उसमें 32% जो हैं, जो लेबर फोर्स हैं, उसमें महिलाएं हैं। And why it is trend? It's a survey. It's a saying because women are very fit for this such type of job where flexibility is there. Working environment में है, because we all agree to it as a women. They are not handling to the workplace. They are also handling to their very successfully at their home affairs also. So we need to encourage. जो वीमेन की बात हम लोग करते हैं, वीमेन फोर्स को, चाहे इनफॉर्मल सेक्टर्स में आप देखिए, जो हमारे इंडस्ट्रीज हो या सर्विस सेक्टर्स में हो, ज़्यादातर जो महिलाएं जो जुड़ती हैं, दे आर डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली। तो उस परसेंटेज को हमें बढ़ाना है। तो ज़रूरत है एक कि जो एक माइंडसेट है, जो अधिकतर हमारे युवा वर्ग जो बारे में सोचते हैं, व्यवसायिक शिक्षा के बारे में, स्किल के बारे में, एक सर्टेन उस पे एक धारणा बना के बैठे रहते हैं कि स्किल है, वोकेशनल्स है, इट्स ए सेकेंड रेट। नो, वी नीड टू चेंज दैट परसेप्शंस। बेस्ट एग्जांपल इज दैट रिसेंटली जस्ट सी वी आर ऑब्जर्विंग। प्रोफेसर सिंह, हम आपको एक सेकेंड रुकेंगे। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, एक दर्शक हमारे जुड़े हैं कोटा से। नमस्कार, कोटा से जुड़े हम अपने दर्शक का स्वागत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, आप अपना प्रश्न पूछें। हाँ, मेरे बेटे का मैं बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है जी। प्रहलाद का एडमिशन कराया था, तो फीस पे करने के पहले हमें कुछ क्वेश्चन हैं
जी प्रश्न पूछे। ये पूछना चाह रहे जो क्रेडिट आवाज ही नहीं समझ, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। इनकी आवाज से थोड़ी सी व्यवधान है। मैं कोटा से जुड़े इनका हम फिर से आग्रह करते हैं कि आप पुनः एक बार हमसे जुड़ने का प्रयास करें। आपके जुड़ने तक आपका इंतजार रहेगा। प्रोफेसर सिंह। So what I was telling कि अभी जो एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है इट इज नॉट चेंजिंग, और उस बदलते परिवेश में हमें अपने प्रोग्राम कोर्सेस ऑल्सो वी नीड टू फोकस इट सो दैट वट एवर द स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम टू आवर कोर्सेज, एंड नाउ ट्रेंड इज व्हाट इज सेइंग इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के बजाय हम यदि सर्विस सेक्टर्स की ओर हम यदि एम करें, हम फोकस करें, तो हमारे युवाओं को बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और खासकर जो उनको एक इस तरह की कॉम्पिटेंसीज भी हमें हमारे पास है, हमारे प्रोग्राम्स में इनबिल्ट हैं। खासकर जो सॉफ्ट स्किल्स की बात हम लोग करते हैं, जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस का, ये जो है ये स्किल्स, ये कॉम्पिटेंसी मेक आवर लर्नर्स रेडी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। हेलो, थैंक यू सिंह साहब, आपने बड़ी अच्छी तरफ इशारा किया। अगेन वी हैव टू टेक द कॉल फ्रॉम कोटा। नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है। प्रश्न पूछे। थैंक यू सो मच। बहुत डिस्टर्बेंस है, बट मेरा क्वेश्चन ये कि सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम। हम बहुत प्रश्न पूछे। हम तो बहुत जोर से आपका स्वागत है। उधर ही दिक्कत आ रही है। अब आ रहा है समझ? आपको सुनाई दे रहा है? प्रश्न पूछे। आपको सुनाई मुझे लगता है कि फोन कॉल में थोड़ी सी व्यवधान है। बहरहाल मैं मैडम से कहूंगा कि फिर से कॉल कर सकते हैं। जैसा आपने प्रोफेसर सिंह, एज यू टोल्ड दैट यूथ के लिए जो है एस्पिरेशंस की जरूरत है। वी ऑल्सो ऑल नो दैट youth are the custodian of nation's aspirations. Youth are the custodian of the policies and destiny of the country. Now, I would like to talk to Professor O.P. Sarma, who is doing a lot more activities for the youth, that किस तरीके से aspirations को reality में कैसे लाना है, क्या क्या उम्मीदें हैं इन यूथ से, और उन उम्मीदों को किस तरीके से हम एक अमली जामा पहनाने का कोशिश करें। हाउ टू ट्रांसलेट दोज एस्पिरेशन इनटू एक्शन एंड हाउ टू टेक इट टूवर्ड्स रियलिटी। प्रोफेसर ओपी शर्मा जी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट यूथ इज थिंकिंग अबाउट द कंट्री, अबाउट द सोसाइटी, वी हैव टू ब्रिंग दैट इन अ रियलिटी। फॉर दैट पर्पज जो मैं बात करूंगा कि इफ यू टॉक अबाउट द गोल्स एंड विजन ऑफ द विकसित भारत एट 2047 विच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज विजुअलाइज्ड, one of them is the empowerment of youth. Empowerment of youth in terms of enabling them to take jobs and to do something for the society, for the country, and to make changes in the system. That kind of empowerment is required, and what Professor RSP Singh had emphasized, skill development and empowering them to become a job provider instead of job seeker, that is very much required. Second important goal visualized in the Viksit Bharat 2047 document is community development, because only focusing on the youth will not be sufficient. We have to focus, we have to think of the community as a whole also. There are many problems, many things which community would be thinking to be considered. That is very important. And to achieve these all, another important goal, that is innovation and entrepreneurship. Because when we talk about youth empowerment or the Nari Sashaktikarn or the community development, in all these cases, innovation and startup and entrepreneurship, that is very much required. And once you make youth empowered and they are able to do something at their own, they will not only be contributing for the country and society, but they will be self-reliant also. And that is very much required, particularly when we talk about the Atmanirbhar Bharat. And when we talk about the Viksit Bharat in 2047, means we'll have to be self-reliant, Atmanirbhar, and then these all things have to be considered. For that purpose, empowerment of youth is also very important.
And to achieve these all things, another important goal that is visualized in the Viksit Bharat document, that is civic engagement and governance. Because unless you are thinking about the civic senses, what you should do, what you should not do, you cannot say yourself to be a Viksit Bharat person, citizen. आपको ये देखना ही पड़ेगा कि अगर आपको अपने आसपास साफ सफाई करनी है, जो आपकी ड्यूटीज हैं विच आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल हैव टू फॉलो दोज इन एडिशन टू दोज योर राइट्स. So that is very much important. Right, sir. So while we are talking about youth empowerment, Professor Suresh, is always possible when you are going to talk about how to integrate technology, how to see that this community development, about the goal he was talking about, Professor Sharma, the kind of innovations and the kind of entrepreneurship we are talking about as a goal of this Viksit Bharat. We are talking about civic engagement and the governance. These four are important and very important, but it is not practicable, doable, unless you talk about technology integration into all these areas. What is your take on these goals? While you are talking about the youth development, whether you talk about the community development, whether you are talking about the civic engagement and governance or entrepreneurship, innovations, whatever you talk about, Professor Suresh, I would like to hear from you that how you see that technology is going to take a pivotal role into this aspect. Professor Suresh. Yeah, thank you very much. As of youth empowerment is concerned, for any country, definitely to progress and ultimately to become a developed country, youth empowerment is essential. And that too, when we have millions of youth in our country and most of our population is of youth, I have to say maybe at approximately less than 35 or 37 years of age. One very important thing is that every youth is having some skill. Now, it is essential to work on the enhancement of the skill which they already have. In that, IGNOU is already playing a major role, and IGNOU can also play further role in it. One thing is that there are many youth who are having complete grip over their local language. So, one thing is that to help them enhance their skills in the local language. In IGNOU, we are offering some programs in local language. Even through Swayamprabha channels of IGNOU, many lectures are being delivered in local languages. So youth across the country are not deprived of the knowledge due to language barrier. So language is one critical thing that the youth will be empowered using their own language to learn things further. Second thing is that the programs which will be useful for youth to not only to stand on their own legs, but also to provide global employment. In this particular area, emerging technologies such as artificial intelligence, machine learning, Internet of Things, quantum computing, which today our Chief Guest, Honorable Vice President of India also quoted, it is very much essential that we educate the youth in these emerging areas. And at IGNOU, we have a Master of Computer Applications program in which we have AI and machine learning, big data analytics, Internet of Things, mobile computing, and many more courses as part of MCA, Suresh, which again, are emerging areas. Professor Suresh, again, the quota is again calling us. Okay, we would like to welcome again Kota, caller from Kota. Namaskar. हेलो 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 जी नमस्कार, आपका स्वागत है. नमस्कार सर, मनोज बोल रहा हूँ हरियाणा से. जी जी मनोज, बताएं हरियाणा से किस जगह से बोल रहे हैं आप? हरियाणा भिवानी से. भिवानी से बोल रहे हैं, आपका स्वागत है. प्रश्न पूछें. थैंक यू सर. सर ये बताइए कि 2047 तक हम किस किस क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं विकसित भारत के लिए?
इनका प्रश्न मनोज जी का प्रश्न है कि किस किस क्षेत्र में हम विकसित भारत में किस तरह से हम इसमें अपना भूमिका बना सकते हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं। अब मनोज जी, आपके प्रश्न का उत्तर हम अभी अपने विशेषज्ञों से पूछते हैं। आप प्रोग्राम को देखते रहें, आपके प्रश्न का हम उत्तर आपको मिलेगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। यस प्रोफेसर सुरेश, you first continue your thing and then please. I think actually मेरा जवाब जो अभी हमारा क्वेश्चन है मनोज जी का, उससे भी रिलेटेड है जी, क्योंकि ये जो कोर्सेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के ऊपर जी, उनका एप्लीकेशन इज वेरी वेरी वाइडर जी। आप जिस फील्ड में भी है उस पे आप एआई अप्लाई कर सकते हैं जी। और मेडिकल फील्ड में एआई का काफी एप्लीकेशन हो रहा है एंड कई एरियाज में एआई का एप्लीकेशन हो रहा है। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नाउ एआई हैज बिकम कंपल्सरी फॉर एवरीबडी। अभी तक क्या है कि मोबाइल कैसे चलाना है, इंटरनेट कैसे एक्सेस करना है, ये सारा कंपल्सरी है। इसके लिए कोई आपको बताने का जरूरत नहीं है, कन्विंस भी करने का जरूरत नहीं है। आज के दुनिया में आपको सर्वाइव करना है तो ये मिनिमम चीजें हैं। अब एक तीसरा है जो लोग बहुत जल्दी ही समझेंगे कि वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड बी ए लिटरेट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स मैंडेटरी। आपका प्रिस्क्रिप्शंस एआई इनेबल्ड होंगे, आपका मेडिकल रिपोर्ट्स एआई इनेबल्ड होंगे, सब कुछ एआई इनेबल्ड होगा एंड इट विल बी ए वेव जस्ट लाइक इंटरनेट वाज ए वेव। जब इंटरनेट आया था तब तो इतना इंटरेस्ट नहीं था लोगों को, बट नाउ इट हैज बिकम ए वेव। सिमिलरली एआई इज द नेक्स्ट वेव विच इज ऑलरेडी मेकिंग मेनी थिंग्स पेरिशेबल एंड इट इज स्टैंडिंग ऑन देम। इसलिए मैं ये सुझाव देता हूं कि इग्नो में कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। ये जरूरी नहीं कि आप 3 साल के एमसीए 2 साल के एमसीए प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाओ या बीसीए का 3 साल प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाओ। आप इंडिविजुअल कोर्सेस करके अपना आपको एम्पावर कर सकते हैं। वॉट एवर इज योर स्किल यू कैन एनहांस दैट स्किल बाय स्टडीइंग एंड रजिस्टरिंग टू द इंडिविजुअल कोर्सेस। So a 2-3 months course or 1 month course you do and you apply that to your own skill and ultimately you may be going for employment. In case you are having an idea, you can also start up a company. Government of India is providing a lot of support for those people who wants to start their own companies. तो आप एक कंपनी भी शुरू कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगा तो अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप सफल नहीं रहेंगे। आपको कंपनी शुरू करने के लिए आपको एक आइडिया होना जरूरी है। अगर सब लोग एक काम कर रहे हैं आप भी वही काम करेंगे तो आप सफल नहीं रहेंगे। आपको एक आइडिया चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना जरूरी है, फिर उसके ऊपर स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी स्टार्ट क्रिएटिंग द कंपनीज वेयर वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द एंटायर वर्ल्ड, देन Vikasit Bharat will be not only just Vikasit Bharat, but will be top among all the developed countries in the world. This is my take. Yeah. So, as you have seen, Professor Suresh was just talking about that days has gone when we were just looking for the digital literacy. We have achieved that digital literacy to a possible extent. What he was talking about is that a time has come when we have to become AI literate. We have to know what is machine learning, what is the Internet of Things. These are essentially, and these are not what I feel. I am not a student of computer, but I think these are not rocket sciences for the days to come. So that is what is important. Now coming back to Professor O.P. Sharma, is that जब हम बात इनोवेशंस की करते हैं, जब हम बात एंटरप्रेन्योरशिप की करते हैं, और जब इस तरह से डिजिटल लिटरेट लोग हमारे पास हैं, जिस तरह से हमारे पास युवा बड़े ही अनुशासित युवा हैं, इसके बड़े एस्पिरेशंस हैं, ऐसे युवाओं के लिए आप किस तरह से इग्नू उनको एक चैनलाइज करने के लिए क्या क्या कर सकती है, कैसे कर रही है और क्या कर रहे हैं सर आप प्रोफेसर ओपी शर्मा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं जो अभी मनोज जी का एक क्वेश्चन था, किस तरीके से वो विकसित भारत के लिए क्या क्या हो सकता है, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहूँगा कि विकसित भारत है 2047 जो विजन डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, उसका एक मेन फोकस पॉइंट है एम्पावरिंग द यूथ, एम्पावरिंग द इंडियंस।
एम्पावरमेंट अब किस किस तरीके से हो सकता है वो हमें सोचने की जरूरत है, और उस कॉन्टेक्स्ट में हाउ इग्नो कैन प्ले रोल एंड हाउ इट इज डूइंग, दैट इज ऑल्सो पॉइंट टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। जो एम्पावरमेंट है वो केवल एजुकेशन या डिग्री या डिप्लोमा प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। एम्पावरमेंट जरूरी है उसको एक हेल्दी एक सिटीजन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे स्पिरिचुअली भी वो स्ट्रांग हो, इमोशनली भी स्ट्रांग हो, कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, कोई और ऐसी एडवर्स सिचुएशन आ रही है, उसमें कैसे हैंडल करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं उनके लिए, फिजिकली मेंटली हर तरीके से फिट हो, इन ऑल एस्पेक्ट्स में उसको एम्पावर करना जरूरी है। और वहाँ इग्नो या इस तरीके के और जैसे भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कि एक तो उनको एजुकेशन दीजिए सो दैट दे आर गेटिंग रिक्वायर्ड डिग्रीज डिप्लोमास फॉर गेटिंग द प्रॉपर जॉब और एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट ही एक अंतिम रास्ता नहीं होता है। जैसे कि अभी प्रोफेसर सुरेश भी कह रहे थे, आप भी हाईलाइट कर रहे थे, आज की डेट में पूरे देश में इस तरीके का एक माहौल है, एक ऐसा इकोसिस्टम है विच इज एम्फोसाइजिंग ऑन द इनोवेशन एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक इग्नो, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्पावर द स्टूडेंट्स to go for their entrepreneurship, to set up their business, to set up their startups. And for that purpose, Government of India is providing different kind of support, financial support, academic support, legal support. एक दर्शक जुड़ा है पलवल से, हम पहले हमें माफ करेंगे, बिल्कुल, हाँ, बात पलवल से पहले बात करते हैं। पलवल से जुड़े हम अपने दर्शक का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप अपना नाम बताएं, किस जगह से कॉल कर रहे हैं, क्या नाम है और किस तरह के प्रश्न आपके लिए आपके पास है हमारे लिए। जी धन्यवाद सर, मेरा नाम दीपक है। जी दीपक जी, मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा से हूँ सर। जी सर, मैंने बीए में एडमिशन लिया था, तो उसके लिए जो फॉर्म फिल किया था तो उसे घने दिन हो गए, मतलब बहुत दिन हो गए सर। तो उसमें मेरे फॉर्म में एक प्रॉब्लम आपकी ओर से मेरे पास मेल की गई थी कि आपके 12th क्लास की मार्कशीट में थोड़ी सी परेशानी है या वो बढ़िया तरह से दिख नहीं रही है, साफ नहीं है। तो सर मैंने वो दोबारा से रिसॉल्व कर दिया सर वो प्रॉब्लम। उसके बाद कितने दिनों के बाद मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा सर? जी पलवल से बड़ा ही एक दूसरा प्रश्न है, ये बीएड के एडमिशन से मुतल्लिक है इनका प्रश्न। और दीपक जी, मैं आपसे यही कहूँगा कि एक आप हमसे अपने जो प्रॉब्लम है, आपकी जो आपकी समस्या है, उसके समाधान के लिए एक ईमेल एड्रेस मैं अपने कंट्रोल रूम को भी कहूँगा कि srd@ignou.ac.in को भेजें और हम उसको फॉलो अप करके आप तक उस प्रश्न का उत्तर हम दे पाएंगे। इनके +2 के मार्कशीट में कोई दिक्कत थी जिसको लेकर के, बट आप निराश ना हो, हम आपके प्रश्न का मैं अपने कंट्रोल रूम से कहूँगा कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन का जो ईमेल एड्रेस है srd@ignou.ac.in जरूर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश करें, सो दैट दीपक जी उसको नोट कर सकें और वो हमसे वो प्रश्न पूछ सकें, हम उसको फॉलो अप करके उनके प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। दीपक जी, आपके प्रश्न का हमें आपको उत्तर मिलेगा। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्रोफेसर शर्मा, आप बात कर रहे थे, इनोवेशंस की बात कर रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा था कि विकसित भारत 2047 का जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि एम्पावरिंग द यूथ एंड द इंडियंस। और जब एम्पावरमेंट ऑफ यूथ की बात करते हैं तो वहाँ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और उस कॉन्टेक्स्ट में हम केवल यूथ में ये नहीं देख सकते एक यूथ, वहाँ एक कंपोनेंट और बहुत आता है जो हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आपकी इस विषय पे फिर हम चर्चा करेंगे। हमें कंट्रोल रूम से इशारा मिला है कि इससे टाइम फॉर छोटे से अंतराल का वक्त है, तो हम अपने सारे दर्शकों से यह वादा करते हैं कि हम जस्ट आपसे पुनः मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहें और बने रहें इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अभी आते हैं, नमस्कार।
Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system? Or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOJNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is a bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in a distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. इग्नू के सबसे लोकप्रिय चैनल ज्ञान दर्शन पर पुनः हम अपने सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं. वी वेलकम ऑल आवर व्यूअर्स ऑन द वेरी वेरी पॉपुलर एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू ज्ञान दर्शन. As you all know, this is a 24/7 channel where we are interacting with our learners with various programs of studies, various courses, various awareness program, and the program which really affects you and whole community. So we welcome all of you, and today we are here to discuss the IGNOU's initiative towards Viksit Bharat 2047. And you know, you believe me, it gives me shivering in my spines when we talk about a developed country in 2047. When we are going to celebrate our 100th Independence Day, we will be saying with pride that yes, we are also a citizen of a developed country, a country of aspirations, a country of more than 140 billion people, those who are really thriving on aspirations of contributing to the various activities of the development of the country. We were talking about the youth empowerment, we were talking about community development, we were talking about the innovations, startup, entrepreneurship. And to continue that, we would like to again request Professor O.P. Sarma ji,
that please initiate your discussion, which you were talking about, the innovation, startup, and entrepreneurship. Professor Sharma. Yes. In fact, I was talking about the role of innovation in a startup in the Vikasit Bharat at 2047. And in that context, I was mentioning that Government of India is very much promoting and supporting the innovation, startup, entrepreneurship in the country. And you all might be knowing that presently India is the third biggest startup country. That is a very great pride for all of us. And in that context, I would like to tell you all that IGNOU is also contributing for its students. IGNOU is empowering its students both for innovation and startup. Many of our students are doing good innovations and they have taken their innovative ideas to startups also. And for that, we are not only supporting them regularly, but mentoring in a one-to-one manner also. I would like to tell you that in case of IGNOU, जो हमारे students हैं, those who are doing innovation and startup, उनमें I'm happy to share that equally male and female both are coming forward. They are doing innovations, they are doing startups, और वो भी ऐसी situations when they are not with us physically. They are spread all over the country and they are in different situations. Even then, they are coming forward and doing these innovative things. And in IGNOU, the National Center for Innovation and Distance Education, with the help of the schools of studies and the regional centers, 57 regional centers we have in the country. With those all, we have tried to create an innovation and startup ecosystem. And that innovation and startup ecosystem is basically working in a different, that you can say the step way. Different steps are there, different stages are there. First is we are trying to create a culture of innovation in the university by way of organizing different kind of programs and events. That is trying to motivate and encourage students to be towards the innovation and startup. And when we talk about empowering youth, in that context, this is very important to motivate and encourage them towards the innovation and startup. And for that purpose, the university has been organizing different programs, we can say the capsule training program that we call student empowerment for entrepreneurial development. SEED program we call it. Right. And in this SEED program, normally in a quarterly basis for 2 or 3 days in a regular way, we are organizing these programs where right from the ideation to prototype development and then to development of commercially viable that product, and then to think of a commercialization of that product. Right. This kind of programs are being organized. So that way, IGNOU is trying to empower its students not only in terms of gaining degrees and diplomas, but also to become entrepreneur or innovators that will be contributing towards the Vikasit Bharat at 2047. Thank you, Dr. Sharma, and you are very right while you are talking about that, these are the maybe looking like to be a small steps, but these steps are going to be a leap, and it is going to create a history in making Viksit Bharat 2047. As Professor Suresh is with us, we would like to hear from him, is that, when we talk about innovation, when we talk about startup, when we talk about entrepreneurship, technology, as we all know, is playing a greater role in that. Now, how this technology, the programs which are on offer from IGNOU, is going to really add value to all these kind of startup, innovation, entrepreneurship. So we would like to hear from you, Professor, that how your programs are going to help in making Viksit Bharat 2047. Professor Suresh. Yeah.
I'll be starting with a particular program, and then I'll explain how it will be useful for becoming a Vikasit Bharat 2047 for any learner. One program is our certificate program in mobile application development. You know, now everything is app based. You can order for food through app, you can book a cab through app, and even you can perform financial transactions using a mobile app. Now the $1,000,000 question is that how to develop a mobile app. There are many technologies. You have large number of mobile phones, then each phone is having operating system. So there are many operating systems. If you develop a software, it will run on one mobile, it will not run on another mobile. Then is it that you have to develop software for every operating system separately, or is there any way that you develop single piece of software that will run on all mobiles? Then over and above, if you learn how to develop a mobile app, then for what you want to develop the mobile app? We frequently hear that companies like Apple, Samsung, many companies, they buy mobile apps. They buy an app even for $1 million, and they will make it available on their operating system free of cost or with some cost to the customer. Now, who is developing these mobile apps? They are teenagers, small children. They get an idea, they develop an app, they learn how to develop a mobile app without undergoing even a program or a course. They use the web resources and they deploy it. People start installing it. Once people start installations, the concerned company will observe that this app is having a lot of demand. So better we buy that app, and that is how the business is going on. So if you are having an idea, you can even develop a mobile app, and IGNOU is offering a program which I have already mentioned, certificate in mobile app development, using which you can learn how to develop mobile app, where we are covering the app development using Android, and even how to develop hybrid mobile apps, that is you develop an app that runs on any operating system. So this is one program IGNOU is offering, wherein anybody can join that program with a 10+2 and learn and deploy mobile apps without employing anybody to develop an app, provided they have an idea. So this is one program. Then another program is, which I have already quoted earlier, Master of Computer Applications. This program is unique because we revised it. So it is having all latest courses. You cannot compare IGNOU MCA with any other MCA. Okay, if two people are of MCA, the IGNOU MCA degree holder is having a huge advantage because the content is completely latest. I have already said we covered mobile computing, AI, big data analytics, data science, everything in it. So anybody who does IGNOU MCA is having a huge edge over other MCAs because they have to learn them over and above their MCA program. But in the case of IGNOU, they are directly coming. So the students who are pursuing MCA, they are also starting their own companies, and also they are becoming most sought after because the companies are also looking for people who are having knowledge of the latest technologies. So once you are having experience in a good company, sooner or later you may have your own company also. So in this way, we are providing mass employment to the people by making them information technology literates in the latest areas, which will enable our country to become a Vikasit Bharat in 2047 with complete command over the computing knowledge. Thank you, Professor Suresh. And I am really excited when we talk about this innovations, when we talk about the startup. I would, before going to Professor R.P. Singh, I would again come back to Professor Sharma. That can you tell us, can you share some of the best stories which our student had done and how they had done it? What kind of support we have provided to them? These best practices must be shared on this ground, on this very platform, so that our viewers can have an idea about how universities supporting all such best practices. Professor O.P. Sharma. It's a good thing that to share with our Professor students. Sharma, I will just stop you here for a second. There is a caller from Bihar. Ji, We sir. would like to hear from him first.
नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। नाम बताएं और प्रश्न पूछें। सर मेरा नाम उमर फारूक है सर, हम पूर्णिया बिहार से बात कर रहे हैं। जी फारूक साहब। सर एक कोर्स का सर हमने ट्रांसफर करवाया था सर, इग्नू के ऑफिशियल नंबर है सर, उस नंबर पे कॉल करते हैं सर, एक रिस्पांस नहीं मिलता है। और हमारा स्टडी सेंटर सर पटना है सर, वहाँ पे भी सर बात नहीं करते सही ढंग से, इसकी जानकारी क्या है नहीं है उसके बारे में नहीं बताते सर। जी सर। किस कोर्स में था आपका एडमिशन फारूक साहब? जी सर मेरा बिलीस का था 2021 वाला सर, उसमें मैं अनफॉर्चुनेटली हमारे बदकिस्मती से सर एक पेपर छूट गया था। फारूक साहब, आपसे मैं आपका एनरोलमेंट नंबर पूछ लूं? आज ही मैं रीजनल डायरेक्टर पटना से बात करके आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। आप जरा अपना एनरोलमेंट नंबर बताएं। 21 हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूं, बताएं आप। 210 जी 87 जी 640 70। राइट फारूक साहब, आपको आज हम आपके क्षेत्रीय निदेशक महोदय से बात करके मैं देखता हूं और आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूं। और एक छोटा प्रश्न था सर। जी सर हमने क्रेडिट ट्रांसफर भी करवा लिया सर, हमने इग्नू को भी सर भेज दिया सर, मेल करके भेज दिया सर, वो 12 तारीख को भी इसको रिसीव भी हो गए। जी सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके क्रेडिट ट्रांसफर होने में सर कितने दिन लग जाएंगे और सर इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी सर? ये जानकारी आपको आपके ईमेल से या पत्र से मिलेगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है कि आपको मैं बताऊं कितने समय में कितने दिन में। यथाशीघ्र विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। जहां तक आपके प्रॉब्लम BLIC से रिलेटेड है पटना से, उसकी समस्या का समाधान के लिए आज मैं उनसे बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और एक छोटे से प्रश्न सर, एक और सर, माफी चाहता हूँ जी सर। ये मैंने MAPC का सर कोर्स किया है जी। उसके स्टडी सेंटर मुझे सर इग्नू का जो उसका स्टडी सेंटर है 529 जी। मैंने असाइनमेंट सर खुद जमा करने के लिए गया सर, वहाँ पे थोड़े रफली बात करते हैं, तो मैं उसको स्टडी सेंटर को चेंज करने के लिए सर 3 बार रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ, तो वो अब तक सर कुछ नहीं हो रहा है सर उसका। मैंने खुद जा करके सर, हमारे घर से 500 किलोमीटर दूर है सर पटना जाने के लिए सर। जी जी मेल में मांग लिया। मैं इस चीज के बारे में फारूक जी से की सारी जानकारी हमें मिल गई। फारूक जी इसका नंबर बताओ सर, इसका MAPC का जो एनरोलमेंट। फारूक जी MAPC के स्टूडेंट हैं और उन्होंने चाहा कि उनके घर के पास अध्ययन केंद्र हो, बट MAPC इज अ वेरी वेरी हाई एंड प्रोग्राम और MAPC के स्टडी सेंटर हर जगह नहीं होते हैं। बहरहाल मैं रीजनल डायरेक्टर पटना से आज बात करके इनके समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। फारूक साहब, आप हमसे जुड़े, अपने समस्या को साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So it's a kind of a, we are having a student strength of more than 13 lakhs per semester. So we have to look into these kind of concern also. So I am very appreciative about Farooq that he has raised such issue. Anyway, I was coming back to OP Sharma ji. I was talking about the best practices which we have done and how university is supporting them. Hold quota for some time and we will again take the call. Just ask them, just request them to hold for a minute. Let me ask the expert about the best practices. Okay. देखिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो मैं बात करूंगा इनोवेशन स्टार्टअप में, जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि इग्नू अपने स्टूडेंट्स और इवन एलुमनी के लिए इनोवेशन स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती रही है जी। और उनमें से एक हम बात करें तो बेस्ट इनोवेशन अवार्ड की एक स्कीम है हमारी, जिसमें एवरी ईयर वी हैव बीन इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स और उन एप्लीकेशंस के बेसिस पे हम उनमें से बेस्ट इनोवेशन को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उनको अवार्ड भी देते हैं। और उन बेस्ट इनोवेशंस को हम अपने फाउंडेशन डे पे बुला करके इस तरीके से जो भी अवार्ड देने की जो प्रक्रिया है वो भी रहती है। इसके साथ साथ हम अपने स्टूडेंट से, जैसे पर्टिकुलरली मैं अगर विकसित भारत एंड 2047 की बात करता हूं, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमने अभी अपने इग्नो के स्टूडेंट्स और एलुमनी के लिए वी हैव लॉन्च्ड ए स्कीम ऑफ competitions, challenges based on the Vikasit Bharat at 2047. And in that, one of them is the idea competition at 2047, ideas for Vikasit Bharat and 2047. This is one of the important scheme totally based on the Vikasit Bharat 2047
थीम, जिसमें हमने 2 थीम्स को फोकस किया है. हाउ डू आई विजुअलाइज विकसित भारत इन 2047 and then how do I visualize IGNOU in Viksit Bharat in 2047. All IGNOU students and alumni, they can apply for this scheme. Detailed informations are available on IGNOU website. और इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज के बेसिस पे वी हैव आइडेंटिफाइड इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिनमें से अगर मैं इनोवेटिव स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज कुणाल अम्बस्ट. ही हैज डेवलप्ड AI बेस्ड ऑटोमेशन होम ऑटोमेशन सिस्टम. और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे अब तक जितने भी होम ऑटोमेशन सिस्टम रहे हैं, दे आर बेसिकली इंटरनेट बेस्ड, बट ही थॉट ऑफ द प्रॉब्लम और द चैलेंजेस इन दैट, कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज इन दैट केस डेटा एक तरीके से शेयर हो जाता है. व्हेन वी गो ऑन द इंटरनेट, डेटा इज शेयर्ड विद मेनी एजेंसीज. ही थॉट ऑफ द प्रॉब्लम कि नहीं, ऐसा कोई हम एक होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाए जिसमें कि हमारा डेटा शेयर भी नहीं हो और हमारा पर्पज भी वो सॉल्व हो जाए. He did this, he developed, and he is a MCA student of IGNOU, and he was awarded with the best innovation award by the IGNOU. And then he appeared for the Smart India Hackathon, and there he won the first prize. That is one of the good example. And similarly, there was another team who appeared in the Smart India Hackathon, participated in the Smart India Hackathon, and they were the first runners up. And similarly, there are many startups by IGNOU students. Definitely, there are many. There are many startups by IGNOU students that will take time. Normally, we have been organizing a series of Udyamita Ki Or, that is on the 2nd and 4th Wednesday of every month, in which we are trying to bring all those innovators and startups, और उनकी stories को हम share करते हैं. तो अब हमारे जो viewers हैं, they can come and participate in that program also. So thank you. We are really very happy to see that how university is coming forward in extending their support in taking them to hackathon kind of opportunities. So just before I come back to Professor Suresh, I would just very briefly would like to yes, sorry. We have a caller from Kota. Let's take call from Kota first, and then I will come back to Professor Singh and then Professor Suresh. कोटा से जुड़े हम अपने दर्शक का स्वागत करते हैं. आपने 2-3 प्रयास किए हैं. आशा है कि इस प्रयास में आपसे बात हो पाएगी. जी, thank you so much first of all for taking my call and for your precious time, and sorry for the interruption. I was really keen. I'd been trying to call you for the last 5 days, but the line was always going busy, so we were getting very frustrated. Can you tell us your name, ma'am? My name is Asha Kapoor, and I'm the mother of Prahlad Singh, and I recently enrolled my son for the online course. And before I make the final submission, like make the payment, I had some questions. The first question is, when will this online semester start and when will it end? Yeah, ji ma'am. Second? Second is, will he have access to videos, and how will the course run? Like, what is the procedure, and when will he get the results and mark sheet, etc. That's a basic question. Thank you, Madam Asha Kapoor ji. And I'm very happy to see that mother is calling for the ward, and she is more concerned about when this online program is going to start. And second question was regarding how they are going to get this support and all those kind of things. Madam Asha ji, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, what I would like to just inform you that just wait for little more time. You are going to get everything on the email address of the learner, and in case you find any difficulty, I would like to request you, just wait for a week only. If in case you do not get the same, you can write an email to coe@ignou.ac.in. Online program kaun sa hai? And I would like to just say that you have not mentioned specifically which program you are talking about, but definitely you write your request to us after a week's time, so that we can really get back to you about your specific issues. Thank you, ma'am, Asha ji, for making call to us. Now, coming back to Professor Singh, किस तरह के प्रोग्राम
इतनी बातें अभी हम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम आपको लगता है कि विश्वविद्यालय के पास है? क्या विश्वविद्यालय इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के विकसित भारत की तरफ जा सकती है, या अगर है तो किस तरह के और प्रोग्राम की जरूरत है? जस्ट छोटी सी 2 शब्दों में सर आपसे। धन्यवाद। जो हम लोग आज की चर्चा में बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047, और इसमें जो बातें उभर की आ रही हैं, एक हमारे दर्शक ने भी पूछा भी था क्या क्या चीजें हैं, और जो मूलतः जो बातें हम जो रोजगार की ओर देखते हैं टुवर्ड्स वेरी क्लोज कॉम्पिटिशंस, वेरी learner communities, they fight, they compete with each other. Competition is good, but point is that important that let us talk about the self employment, आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ें, ताकि हम स्वयं ही रोजगार हो सकें, बाकी हम अपने नजदीक के लोगों को, मित्रों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, और हम अपनी इकोनॉमी में भी वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन दैट वे. आई एम हैप्पी टू शेयर दैट द स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग इज ऑलरेडी ऑफरिंग ए प्रोग्राम इन MA एंटरप्रेन्योरशिप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर दर्शक लर्नर्स कि आप जुड़े इस प्रोग्राम में. और विशेषकर हमने इस प्रोग्राम में जो एलिजिबिलिटी रखा है कि नॉट ए कॉमर्स और समथिंग साइंस, इट्स ओपन, एनी ग्रेजुएट्स कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम. और इसमें हमने एग्जिट का भी ऑप्शन रखा है, प्रोजेक्ट्स का एक्टिविटीज है. एंड आई ऑल्सो हैप्पी टू शेयर, डॉक्टर शर्मा वाज टेलिंग अबाउट दैट इनोवेशंस में पार्टिसिपेट्स हमारे विद्यार्थी करते हैं, एंड दे हैव गॉट फर्स्ट प्राइज ऑल्सो. तो इस तरह से एक कॉम्पिटिटिव माहौल है. हमारे बहुत सारे विद्यार्थी MA प्रोग्राम में ऑलरेडी एक दे आर रनिंग देयर एंटरप्रेन्योर, स्टिल दे हैव ज्वाइन टू लर्न व्हाट द चैलेंजेस आर देयर. तो इस तरह के प्रोग्राम, एक सिमिलरली एक हमारा प्रोग्राम BA MSME के लिए भी है. जी. तो इस तरह के प्रोग्राम में यदि आप जुड़े तो अवश्य ही आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे. प्रोफेसर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुकम्मल तौर पर IGNOU के सारे पाठ्यक्रम अपने आप में एक अवसर प्रदान करता है. ये मैं अगर सारांश में कहूं तो IGNOU के सारे प्रोग्राम विच आर ऑन ऑफर, और उन सारे कार्यक्रमों को जानने के लिए हमारे IGNOU के वेबसाइट www.ignou.ac.in, कंट्रोल रूम उस वेबसाइट को दिखाएगा भी अपने स्क्रीन पे. तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारे सारे पाठ्यक्रम इस तरह के चीजों में एक एक्सेलरेशन का काम करती है. लास्ट वर्ड फ्रॉम प्रोफेसर सुरेश, what exactly we want to convey to our viewers in converting this whole yuva to contribute successfully to make Bharat a Viksit Bharat in 2047. Professor Suresh. See, one line which I would like to say is that enroll to a program which is having huge demand as on date and will have demand in future. Yeah. So one program which Professor R.S.P. Singh most probably had missed out is that MSc in Information System Security. Okay. This is one program. Master of Computer Applications is now open for BTech students also. It will be of 1 year duration, most probably from the next batch onwards. MCA program. Certificate in Mobile App Development is one program. MA in Entrepreneurship is another program. Sir, we are running out of time. These are the hot cakes. Yeah. Do this and there are very good chances of getting an employment as well as going for a startup immediately. Right, sir. So time is not permitting us to continue it further, but definitely with the viewers, I would like to just share that we are going to have such program very frequently in the times to come. और आज हम अपने सारे विशेषज्ञों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज विकसित भारत 2047 पे हमने बात की. आप हमारे विशेषज्ञ के तौर पर हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और इस तरह से हम मिलते रहेंगे और आने वाले समय में और बातें करेंगे विकसित भारत में कैसे हमारा योगदान हो. आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पूरे EMPC के बैकएंड के टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के कार्यक्रम को ला रहे हैं. आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक हमें दें इजाजत. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.